guys, राम राम, वेलकम टू माय चैनल। गाइस मैं आज आपके लिए चॉकलेट बनाऊंगी। पता है कैसे? चॉकलेट मेकिंग लैब से। माय चॉकलेट मेकिंग लैब। गाइस यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है। इसके अंदर क्या है जो सब लिखा हुआ है। लेट्स ओपन इट। Put the trash in dustbin। अभी आई मैं आ गई। इसमें बुक है, इसमें सब लिखा होगा। लॉलीपॉप मोल्ड्स, कैंडी मोल्ड्स, स्प्रिंकल्स, चॉकलेट पाउडर, वाओ स्टिकर्स, कितने अच्छे से डिजाइन है। Spatula, thermometer, foil, gift wrap, lollipop sticks. Empty. First read the book and we'll start. First, open a spatula. Guys, इस बॉक्स में सब सामान दिया हुआ है। गाइस आपको पता है थर्मोमीटर क्यों दिया हुआ है? ताकि हम मेल्ट चॉकलेट का टेम्परेचर चेक करें। वाओ! डार्क चॉकलेट के लिए 48 डिग्री से टेम्परेचर चाहिए होता है और मेरी चॉकलेट के लिए 45। गाइस इसमें ये पाउडर दिया हुआ है। इस पाउडर में शुगर भी है, कोकोआ इसमें और सॉल्ट भी है और वैनिला फ्लेवर भी है। गाइस ये एक्सपेरिमेंट्स अकेले नहीं करने, अपनी मम्मा के हेल्प से करने हैं। पहले पाउडर को बोल में डालेंगे, थोड़ा सा मिल्क लेंगे। गाइस ये पाउडर में सब कुछ होता है। कोको पाउडर, शुगर, सॉल्ट, चॉकलेट, वैनिला फ्लेवर। मिक्स करेंगे। गाइस डोंट ब्रेक मैश, साथ कभी करते ना। अब हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। इसके लिए हम पैन में सेटअप करेंगे।
दिखाती हूँ कैसे बनता है। गाइस ये है बेन मैरी सेटअप। सॉस पैन लेंगे, उसमें वाटर बॉईल करेंगे, उसके ऊपर एक बीकर रखेंगे जिसमें चॉकलेट मेल्ट करेंगे, लगातार हिलाएंगे। थर्मामीटर की हेल्प से चॉकलेट का टेम्परेचर चेक करेंगे जो कि 45 डिग्री है, मीन्स 113 फ़ारेनहाइट। कितनी अच्छी मेल्ट हुई है। अब इन मोल्ड्स को फिल करना है। गाइस अब इसमें स्प्रिंकल्स ऐड करेंगे। ये साथ साथ खा भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।